Bismillahirrahmanirrahim. Today is my presentation of environmental chemistry submitted to Ma'am Zumaira Siddiqui. My roll number is 1717 from MSc Chemistry, second semester. This presentation is about the topic of soil pollution and its effect on human health. The first topic which is related to the soil pollution is indiscriminate use of pesticide, insecticide and herbicide. First we explain the insecticide, pesticide and herbicide. We know that what is pesticide and why we use pesticide and what is the disadvantages of pesticide, insecticide and herbicide. Plants on which we depend for food are under the attack from insects, fungi, bacteria, viruses, rodents and animals. To kill them, farmers use the pesticide and insecticide. Those plants which we use as food are basically under the attack of many of animals, which may be fungi, bacteria, viruses. To kill them, mostly farmers use these types of pesticide. The first use of insecticide, pesticide occurred at the end of World War II. पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को बेसिकली पौधों पे इस्तेमाल किया जाता है कुछ एनिमल्स को ख़त्म करने के लिए, उन एनिमल्स को जो कि प्रोडक्शन ऑफ फूड को रेजिस्ट करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं. इन तरह की एनिमल्स जो कि फंजाई हो सकते हैं, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इनको ख़त्म करने के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पेस्टिसाइड कहा जाता है, हर्बिसाइड कहा जाता है और इंसेक्टिसाइड कहा जाता है. इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के एंड पे शुरू हुआ, बट आफ्टर द किल ऑफ इंसेक्ट इट डिड नॉट डिकम्पोज readily and soon it entered into the food chain and caused the endangerment of various animal species. इनको इस्तेमाल लाने के बाद ये भी जाना गया कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड को इजीली डिकम्पोज नहीं किया जाता. ये इजीली सॉइल पार्टिकल में डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर फूड चेन में इंटर हो जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम की सबब बनते हैं, जिनमें से एक इंडेंजर्ड ऑफ मैनी स्पीशीज़ है एंड अदर इज कि हमारे हेल्थ में बहुत से अफेक्ट काज होते हैं. इसी वजूहात की बिना पर DDT now has been banned in the most of Western countries. The most important pesticides are DDT, HB, BHC, chlorinated hydrocarbon, etc., which are used on pests may be absorbed by soil particles which contaminate the root crop and cause the problem for health. The second topic about the soil pollution is dumping of soil waste. Before explaining the solid waste, we know that what is solid waste. We define the solid waste as basically the collectively waste which include the garbage, domestic refuse, discarded solid material. They contain the large amount of paper, cardboard, plastic, glass, hazardous substances. The solid waste can be categorized on the two categories on the basis of their property of recycling and biodegradable. सॉलिड वेस्ट को रिसाइकलिंग एंड बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टीज़ की बिना पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक हिस्सा वो जो इजीली रिसाइकल हो जाता है, जिसमें पेपर और फूड वेस्ट आता है, और दूसरा वो जिसमें हैज़र्डस सब्सटेंसेस आते हैं, जिसमें ऑयल, बैटरी, मेटल इंक्लूड होते हैं, जो कि इजीली रिसाइकलिंग में नहीं आते. The significant amount of solid waste is that proper paper and food waste can be recyclable and biodegradable in landfill. And the second is hazardous substances is that oil, battery, metal, heavy metal which come from
smelting industries, and organic solvent easily get deposited into the soil and alter their chemical properties and biochemical properties of soil. कहा जा सकता है कि जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जो रिसाइकलिंग में जल्दी से नहीं आते वो इजीली डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल में और केमिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल को चेंज कर देते हैं and they also contaminate the drinking water sources. Most of hazardous substances, almost 90% waste produced by chemical, petroleum, metal-related industries, and from the small business is that cleaner gas station. ये भी कहा जाता है कि जो ज़्यादातर हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हैं almost 90% of hazardous substances come from petroleum industries, metal-related industry and small business industries जिनमें क्लीनर गैस स्टेशन इंक्लूड होते हैं वहाँ से almost 90% of hazardous substances प्रोड्यूस होते हैं. The third topic which related to the soil pollution is deforestation. We all know that the deforestation, what is deforestation? We know that deforestation in Urdu language as जंगलात का कटाव. Deforestation basically the major source of soil erosion which may be called as Urdu in ज़मीनी कटाव. Soil erosion can be defined as it occurs when whether soil particles are dislodged and carried away by wind and water. Deforestation is the major source of soil erosion. By the way, there is a lot of advantages of forest and grassland. First, it is excellent binding material. Second, keep the soil intact and healthy. Third, support the survival of many species, almost all species of organisms, and support the food chain. But behind this all advantages of forest and grassland, due to the many reasons of human beings, during the last few years, the forest undergoes deforestation. During the last few years, quite a lot of vast green land has been converted into the desert. The main reason of deforestation is that pressure of population growth, construction, mining, overgrazing and overcutting. पिछले कई सालों से ये फॉरेस्टेशन को डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट किया गया है. मीन दैट ग्रीन लैंड को डिजर्ट में कन्वर्ट किया गया. इसकी मेन वजूहात क्या है? द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मे बी कंस्ट्रक्शन, मे बी माइनिंग, मे बी ओवरग्रेजिंग, मे बी ओवरकटिंग. बट ड्यू टू दिस रीजन deforestation have the great disadvantages on our atmosphere and also our biosphere. Deforestation causes the destruction of production of fauna and flora areas and cause the global warming. There are the two main causes of deforestation which we face in our environment. First, the destruction of production of fauna and flora areas and increasing quality of carbon dioxide in our atmosphere which cause the global warming. Easily we can say that deforestation की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है फाना फ्लोरा एरियाज की वो तबाही की तरफ जा रही है. दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है. The fourth topic of the soil pollution is acid rain. Before discuss the acid rain, we know it by definition. Acid rain in fact होता क्या है?
एसिड रेन किस तरह से बनती है? When the pollution, all type of pollution, air pollution, water pollution, all type of pollution enter into the air and mix with the rain, then acid rain form. Acid rain form. Acid rain causes when the pollution present in the air and it is mixed up with the rain and fall on the ground and can change the structure of soil. Acid rain, due to the acid rain, the structure of soil and the properties of the soil can change, and it also change the productivity of soil. Acid rain की disadvantages क्या है? Firstly, ये structure change कर देती है soil की. Second, properties which may be chemical, which may be physical, alter कर देती है. Third, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल चेंज कर देती है, जिस वजह से कल्टीवेशन इजीली नहीं हो पाती. द फिफ्थ टॉपिक which we discuss about the soil pollution is waste disposal. Every human produces a certain amount of personal waste which move into the sewage system and cause a pollution of soil. The sixth topic which we discuss in the soil pollution is accidental soil seepage. Oil pollution is inevitable outcome as the result of rapid population growth and industrialization process. Oil pollution किस वजह से नजर आती है, किस नतीजे पे आती है? इसकी दो वजूहत हैं. फर्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. इन दो प्रोसेस की वजह से ऑयल पोल्यूशन क्रिएट होता है. इन एडिशन, द डायरेक्ट इमिशन ऑफ दीज pollutant dust of burning gases along with the oil have managed to add the toxic and the harmful substances to the soil of region for many years. इसके साथ साथ क्या करते हैं कि सॉइल कुछ टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर ऐड कर देती हैं और कई सालों तक वहीं रहती हैं, रिसाइकलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती और पोल्यूशन काज करती हैं. That's 6 all factor which I describe is about soil pollution, how it create the soil pollution and how it can affect on our health and how it can affect on our biosphere. Now we discuss about the soil pollution which affect on our health, how it affect on our health. Soil pollution can have a number of harmful effects on human health. First, we can say organ damage. Second, we can say as bioaccumulation. Third, we can say as cancer. Soil pollution causes a cancer. Otherwise, behind all these effects, we can also say that soil pollution also affect our economic rate, also affect our economical progress in our country and in our world. First, we describe about organ damage, how soil pollution damaging our organ. कि soil pollution हमारे organ को कैसे damage करती है. The pressure of heavy metal in soil in toxic amount can cause irreversible development damage in children. कहा जा सकता है कि हैवी मेटल जो कि सॉइल पार्टिकल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और जब फूड चेन के थ्रू इंटर हो के इंसानों के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारी ऑर्गन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है. बेसिकली ये चिल्ड्रन में कॉमन है. ये भी कहा जा सकता है कि लेड
और मर्करी जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, अगर इनकी हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो ये हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है और बहुत सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है. Although the lead and mercury may be found naturally in the soil, high concentration of these metals, lead and mercury, may causing the damaging to development of brain of young and children, which lead to the neurological problem. Second, the disease or effect of health which we discussed is bioaccumulation. Bio mean anything which live, like we can say cell, we can say organ, we can say tissue. Accumulation mean किसी भी चीज का इकट्ठा हो जाना, which may be metal, which may be we can say as a toxic metal, hazardous substances. Relatively, we can say the bioaccumulation can be defined as the accumulation of toxic material or the toxic metal in our cells or in our body or in living organism. The plant that grows in lightly polluted soil continuously absorb the molecules of pollutant and accumulate them in their body and in turn in the food chain. Human who eat that plant or animal as food who accumulate the toxic metal in their body may harm the health of human. वो plants which grow into the lightly polluted areas which contain heavy metal like as lead, like as metal, mercury, they easily absorb by plant and then plant deposit it into the cell and accumulate them. वो प्लांट जो कि polluted areas में develop करते हैं और उन polluted areas से हैवी टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अपनी लिविंग बॉडी के अंदर लाइक सेल टिश्यू में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी अक्मुलेट कर लेते हैं. आफ्टर अक्मुलेशन व्हेन दिस प्लांट एंटर इनटू द फूड चेन, सो एनिमल जो प्लांट वो खा लेता है तो उसके अंदर भी ये फूड टॉक्सिक फूड अंदर स्टोर हो जाती है, अक्मुलेट हो जाती है, जो कि हेल्थ में प्रॉब्लम काज करती है. और ये जो फूड है प्लांट एंड एनिमल बोथ टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एज यूज एज फूड ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग प्लांट्स और एनिमल दोनों को एज फूड इस्तेमाल करती है. व्हेन दे ईट द प्लांट polluted plant and animal, then they achieve the toxic material in their body and cause the many problem and cause the many effect on their health, which may be lead to the neurological problem, which may be lead to the ulcer, which may be lead to the death, sudden death, which may be lead to the cancer. Then the third disease which caused by soil pollution is cancer. According to the US Environmental Protection Agency, humans who expose these pollutants are far more likely to develop the cancer than humans who are not exposed them. For example, benzene is now to the cause leukemia in both children and adults. कहा जाता है कि यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक वो इंसान जो कि पोल्यूशन काज करते हैं, पोल्यूशन एक्सपोज करते हैं, उनमें कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दूस ह्यूमन विच डू नॉट एक्सपोज द पोल्यूशन. हाँ, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बेंजीन, जिसकी वजह से ल्यूकीमिया काज होता है, किन में, चिल्ड्रन में भी एंड एडल्ट. द फोर्थ एंड लास्ट
we discuss about the economic laws behind all adverse effect on health, effect on biosphere, effect on our environment, effect on our soil. Now we discuss about our economical laws. Soil pollution also caused the economic damage. For example, some part of soil in China polluted with heavy metal is not used in grow grain. According to the China Dialogue, estimate 12 million tons of the polluted grain must be disposed of every year. Costly Chinese farmer up to 20 billion yuan and $2.57 billion. सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा माली बुरान भी पैदा होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि चीन में ज़मीन का कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से वहाँ कल्टीवेशन नहीं होती, वहाँ पे अनाज नहीं उगाया जाता। कहा जाता है कि वहाँ तकरीबन हर साल 12 मिलियन टन पोल्यूटेड ग्रेन को डिस्पोज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, और इसी वजह से इन्हें बकौल चाइना के वहाँ पे तकरीबन $2.57 बिलियन या पे 20 बिलियन yuan का नुकसान होता है। एट लास्ट ये कहा जाता है कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट इकोनॉमिक रूप से भी पड़ता है, सेहत पे भी आता है, बायोस्फीयर भी अफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर भी अफेक्ट होता है। सो वी कैन and we should use all industrialization process, agriculture process in their limitation. Thank you so much. Jazakallah fi amanillah.